होची कि समस्ते बही बाहर करके इमरजेंसी चैप्टर को चलो है समझ जानिछ कि ए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट ए चैप्टर देखियो सब बेले गोटे ना दुटा क्वेश्चन थाए है एथरे खाली जानियार अछि कि कंडीशंस कोन कोन ब्रॉडली म कहि दोछि को आर्टिकल रे अछि ओके कंडीशन कोन कोन इमरजेंसी रो ओके इमरजेंसी लागिले कोन कोन हुए तार इंपैक्ट कोन जेमति नेशनल इमरजेंसी लागिला तो तार इंपैक्ट स्टेट ऊपर कोन तार इंपैक्ट फंडामेंटल राइट्स ऊपर कोन ओके आउ कोन कंडीशन लगायर इमरजेंसी केते कोन मेजॉरिटी दरकार टाइम लिमिट कोन ओके आउ तार जेतले इमरजेंसी को तुम रिवोक करिवो ओके तार कोन प्रोविजन किए अथॉरिटी ओके को पावर का पाखर रहउची एई सब ब्रॉडली तुमको मन रखियर अछि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे ठीक अछि सर प्रीवियस हां कोठी मिलिबो क्लास वीडियो हमरो जो समन आईएसएनएल रे जोडी तुम एनवायरनमेंट आउ इकोनॉमिक्स रो क्लास पाउछो ओके समन आईएसएनएल रे तुमको मिल जिवो वीडियो ठीक अछि तो स्टार्ट करिया से फास्ट कोच कोन कि इमरजेंसी को अछि ये रे पार्ट एक्स बी ट्रिपल आई ओके पार्ट 18 एडा मन रखो इमरजेंसी होची पार्ट 18 तमरो ओके फास्टिंग फास्ट तापर इमरजेंसी कोर को आर्टिकल रे अछि 352 रु 360 एथरे तीनटा आर्टिकल ही बेसी इंपोर्टेंट 352 तमरो होची नेशनल इमरजेंसी 356 होची प्रेसिडेंट रूल 360 होची फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके इंडिया मन रखी जीवो तापर इमरजेंसी कोन करे कोथि पय इमरजेंसी लगा हुए कोन तार इंटेंशन कोन थिला जतेले इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन रे अडॉप्ट करा हला कोन तार इंपोर्टेंस थिला माने कोन पे रखा हला ओके कि जतलो तमर एबनॉर्मल सिचुएशन आसीबो ना ताकू केमी तमे डील करिवो धरो पार्लियामेंट रे सेशन नाही किछ ओडे हे गेला ओके या तो स्टेट रे सेशन नाही किछ ओडे हे गेला या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोड ब्रेक हे गेला ओके या तो सेंटर स्टेट ठीक ठाक रे काम करू ना इफेक्टिवली तो तमे से सिचुएशन को केमी हैंडल करिवो ओके सेशन तमरो नाही तो कागु तमे माने कागु पावर दबो कोन करिवो तो से कोनते एबनॉर्मल सिचुएशन या तो वार हे गला ओके तो डिसीजन मेकिंग का पाखे रहबो की डिसीजन नबो ओके या तो किछ बहुत बड़ जोडा कहउचंती हमें कि आर्म रिबेलियन जो टर्म यूज करा हिच ओके माने धरो नक्सल आईडी कोड बहुत बड़ जिंस कर देले स्टेट अगेंस्ट रे ओके तो पावर जो हमरो जेतो हमरो फेडरल स्ट्रक्चर अछि स्टेट भी किछि डिसीजन नउची सेंटर भी किछि डिसीजन नउची तो से टाइम रे तमे कोन करिवो केमी डिसीजन नबो ओके सेति पई सेडा कहउचंती एबनॉर्मल सिचुएशन जोडा कि नॉर्मल हो ओके से सिचुएशन रे केमिति डिसीजन निया हो सेति पई इमरजेंसी प्रोविजन को बनाइछ ओके तो से सिचुएशन रे टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री and the democratic political system of the constitution ताको हम केमिति सेफगार्ड करिया एबनॉर्मल सिचुएशन रे ओके ता पे हिच हमर इमरजेंसी प्रोविजंस जानि छ समस्ते देन इमरजेंसी टाइम रे कोन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावरफुल है जाए ओके सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे सब पावर जाए एंड स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओके सो ए टाइम रे कोन हुए हमर जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि सी यूनिटरी फॉर्म का आ जाए ओके तो से कौन इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट किछि करियो पड़ेनी जे आमे ए जिंस को मान जो पावर अछि स्टेट पाखरे ताको आमे सेंटर पाखु नउछु किछि अमेंडमेंट हुएनी किछि सेंटर रे पार्लियामेंट रे पास हुएनी बट इनफॉर्मली सब तक पावर पळाए सेंटर पाखु ओके सेंटर डिसीजन नबो बिकॉज़ जदि पांच जन डिसीजन नबे गोटे इमरजेंसी टाइम रे देन यू विल नॉट हैव ए काइंड ऑफ लाइक समस्त डिसीजन अलग अलग हबो ओके तो तार इंप्लीमेंटेशन भी बहुत टफ हो सेति पे जण को डिसीजन दिया होची डिसीजन मेकिंग पावर से सिचुएशन रे आ सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहउची ओके तो इट आउट यूनिक फीचर ओके दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू इन नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी सिचुएशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन केते प्रकार इमरजेंसी इट स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को सिचुएशन पई हमें इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन करिछन होची वार आउट होची एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ओके जोडा के आर्टिकल 352 एडा कोछ ना में नेशनल इमरजेंसी हैला नेशनल इमरजेंसी माने इमरजेंसी इन द होल नेशन और पार्ट ऑफ द नेशन डिक्लेयर हिज सेटा को सिचुएशन हे परिबो गोटो होची वार आउट होची एक्सटर्नल एग्रेशन आउट होची आर्म्ड रिबेलियन
ओके तीन प्रकार आमर इमरजेंसी होची गोटे नेशनल इमरजेंसी सेकेंड टा होची ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट ओके जोटा कि आर्टिकल 356 आकु आमे एक्चुअली इमरजेंसी कहू नांती याकु आमे कहउछनी प्रेसिडेंट रूल ओके बिकॉज एट दैट टाइम स्टेट जो अच्छी फंक्शनरी से डिसमिस हे जिवो सब पावर पळेबो प्रेसिडेंट पाखु ओके प्रेसिडेंट तांकर गवर्नर थ्रू रे स्टेट को कंट्रोल करिवे याकु आमे एक्चुअली इमरजेंसी कहू नांती इट्स लाइक ए इमरजेंसी सिचुएशन बट इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल ओके थर्ड टा होची फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके जोटा कि आर्टिकल 360 तो तीन टाइप रो इमरजेंसी अच्छी ओके गोटे हला नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 आ गोटे होची हमर स्टेट इमरजेंसी या तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 आ गोटे होची हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी केतळ हुए व्हेन देयर इज ए फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ताको स्टेबल करिया पय ओके व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मींस व्हाट फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ओके तो तीन प्रकार हला इमरजेंसी ओके मन रहा 352 356 और 360 नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके देन फास्ट गोटे गोटे पढ़िबा हमें सेपरेट नेशनल इमरजेंसी कौन तार कंडीशन कौन ओके का पाखे केमती पावर रोची कौन रोची देन पढ़िबा प्रेसिडेंट रूल देन पढ़िबा फाइनेंशियल इमरजेंसी एते किसी इंपोर्टेंट नाही आज पर्यंत केबे क्वेश्चन भी आसिनी ता ऊपर जस्ट मन रखि थाओ कि तार केतरा कंडीशन अछि को कंडीशन ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लागिवो केते नंबर आर्टिकल तार टाइम लिमिट वगैरह कौन कौन टिके बस हला बट नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अछि इंपोर्टेंट फर्स्ट थिंग कौन कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन को ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए हला फर्स्ट होछि आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल 352 रे मेंशन हेछि नेशनल इमरजेंसी ओके किए डिक्लेयर करंती प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion तीनटा कंडीशन अछि एडे मन रखो war external aggression आ गोटे होछि armed rebellion ए armed rebellion टा होछि internal disturbances एडा आगो टर्म थिला internal disturbances आमे पढिबा आगु कि जे 44th amendment रे चेंज करी कराला armed rebellion ओके कोन पे कराला तार भी अच्छी रीजन ओके तो 352 होछि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए करे प्रेसिडेंट ओके को कंडीशन रे कोन रे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ओके आ कोन मन रखियो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन अकर्स यार मीनिंग कोन जे इन द परसेप्शन ऑफ वार माने वार एपन तो हेनी बट हमको लागिला माने प्रेसिडेंट हमको इन द सेंस द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट दे थॉट कि आगु जाय कि युद्ध हबार चांस अछि या तो somebody is what showing aggression towards us or there is a disturbance ki कोट गोटे लागुची तांकु इंटरनली किछ गोटे रिबेलियन स्टार्ट होउची फॉर एग्जांपल खालिस्तानी मूवमेंट हला जदी सेंटर को फील हला जे एमाने स्टेट ऊपर एक्शन नेबे और देयर इज ए बिग नक्सलाइट मूवमेंट तांकु लागिला जे किछ गोटे बहुत बड़ हबाकू जाउची देन आल्सो दे कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल हैपनिंग अकर्स ओके तार मीनिंग सेट तो एडा मन रखो कि वार हेले ही जे इमरजेंसी डिक्लेयर हबो इट्स नॉट लाइक दैट इवन इन द परसेप्शन वार आल्सो यू कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओके देन दी प्रकार इमरजेंसी ओके गोटे होची एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी ही जो तीनटा कंडीशन अछि वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन एथिरे जदी वार किंबा एक्सटर्नल एग्रेशन पई इमरजेंसी डिक्लेयर करूचो ताकू हमें कहबा जे एक्सटर्नल इमरजेंसी जदी आर्म्ड रिबेलियन पे हम डिक्लेयर करूछन इमरजेंसी ताकू कहबा इंटरनल इमरजेंसी ओके बिकॉज़ दिस आर्म्ड रिबेलियन इज like there is a rebellion inside the country okay armed means like you can say Khalistani movement or Naxalite movement okay or Maoist movement or any kind of armed forces जब तांगे रिबेल करले देन सेटा को हम कहउछन इंटरनल इमरजेंसी जदी युद्ध हला या तो एक्सटर्नल किछि को कंट्री हम ऊपर एग्रेशन करला फॉर एग्जांपल रशिया हैज शोन एग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन okay tomorrow for example let's say Chinese there is a Chinese aggression towards India okay there is no war but there is a Chinese aggression okay so in that case if you declare emergency it is called as external emergency ठीक अछि देन एटा गोटे मन रख मु जहा जहा हाइलाइट करछि सेडा अछि इंपोर्टेंट ओके ए जो इमरजेंसी होछि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट if there is a question in the prelims man तुमको जदी क्वेश्चन अछि कि नेशनल इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड थ्रू आउट द कंट्री
Okay, it cannot be declared in a part of the country, then it is wrong. National emergency पूरा कंट्री नुहे केवल गोटे पार्ट रे भी डिक्लेयर हो पारिबो. ओके, आइदर यू कैन डिक्लेयर, आइदर द सेंटर कैन डिक्लेयर फॉर द एंटायर कंट्री, और किसी गोटे पार्ट पे भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो पारे. फॉर एग्जांपल ओनली द नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओके, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इफ देयर इज a disturbance in the northern India, then the government of the center can declare a national emergency only in the northern part of the country. Okay, that is also possible, not the whole of the country. Okay, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 42nd Amendment Act of the 1976 enabled the president to limit the operation of a national emergency to a specified part of the India. ଆଗରୁ ଏ କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା, ଏ କଣ୍ଡିସନଟା କେବେ ଆଡ୍ ହେଇଛି, 42nd Amendment Act ରେ. ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଏଇଟା କେବେ ଆସେନି, ବଟ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବଳ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇପାରିବ. ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 44th Amendment Act ରେ ये जो आर्म्ड रिबेलियन वार्डटा को अणा ହେଇଛି, रिप्लेस करा ହେଇଛି काकू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को. ये आगुरु थिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बट ड्यू टू द मिसयूज ऑफ दिस वर्ड बाय इंदिरा गांधी, ओके, दिस वर्ड हैज बीन चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन. आगुरु टर्म थिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बट आकु यूज करिकी 1975 रो जो इमरजेंसी लागू करथिले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. ओके, सो ताकू रिप्लेस करा हला आर्म्ड रिबेलियन रे, because internal disturbance is a very kind of vague term. माने कोनटा छोटो गोटे इंटरनल डिस्टर्बेंस हेले भी तमे ताकू ता आधार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे परिबो. ओके, तेणु ताकू टिके स्ट्रांग बना पे वर्ड यूज कराला आर्म्ड रिबेलियन. ओके, आ गोटे कंडीशन कोन, प्रेसिडेंट आम पढ़ले फास्ट रे, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी बट ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट. ओके, प्रेसिडेंट रो जतला मन इच्छा हबो सेतला से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबेनी, या कैबिनेट रो ओनली लाइक माने कोन केवल वॉइस माने डिक्लेरेशन रे भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हे परिबोनी. ओके, the cabinet has to give a written recommendation. Okay, this also came, this condition also came in 44th amendment because Indira Gandhi declared emergency without any written recommendation of the cabinet. Okay, cabinet रो कोनोसी written recommendation बिना इंदिरा गांधी 1975 रे लगे दिथिले इमरजेंसी. तेणु सेति पई कंडीशन अना हला कि कैबिनेट तुमको रिटर्न रिकमेंडेशन दबार अछि प्रेसिडेंट को, देन ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. ओके, देन ए जो प्रेसिडेंट रो इमरजेंसी डिक्लेरेशन, ओके, येटा जुडिशियल रिव्यू कि नाही. ओके, कि माने ताकू जने चैलेंज करि परिबो कि नाही. ओके, तो 38th अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हेतिला, से माने कर देथिले कि जो 1975 रे, डेफिनेटली देखो यार लिंक तमे बुझो, 38th अमेंडमेंट एक्ट हला केबे 1975 रे, इमरजेंसी लागिला केबे 1975 रे. तो जो गवर्नमेंट भी इमरजेंसी लगेछि से केबे भी भाबिबो कि चाहिबो कि यार जुडिशियल रिव्यू हो बोली. ओके, ताकि कोर्ट को गले कोन कोर्ट में भी डिक्लेयर कर दे पारे कि एडा अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो से माने 38 अमेंडमेंट एक्ट रे कोन प्रोविजन आडले कि इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, माने आर जुडिशियल रिव्यू हे परिबो नाही. बट जतलो इमरजेंसी हटिला, 44th अमेंडमेंट एक्ट आसिला, ये याकू चेंज करा हला. ओके, कि emergency declaration by the president also can be go through judicial review. Okay, then ता ऊपर केस हला मिनर्वा मिल्स केस 1980. Okay, सेइथरे सुप्रीम कोर्ट कोन जजमेंट देले कि the proclamation of national emergency can be challenged in court on the ground of malafide or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts. Okay, or is absurd or perverse. माने मान तुमको खाली इतकी मन रखियार अच्छी जे डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. को केस रो आसीटा मिनर्वा मिल्स केस रो कोनटा सुप्रीम कोर्ट देखि परिबो कि वेदर द डिक्लेरेशन और द प्रोक्लेमेशन, the ground of the proclamation is malified or it is irrelevant. Okay, ताकू तमे चेक करि परिबो. ओके, तो इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. जस्ट मन रखो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. ओके, एंड आउट कंडीशन भी जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, यू आल्सो नो, आगो क्लास रे तुमको कहितली जे जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, तो जुडिशियल रिव्यू रो तुम को भी जिंस को एते इजी रे हटै परिबोनी. इट इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके,
ବୁଝିଲ? ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖ। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହଉଛି ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଖାଲି ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରେସନ। କେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ କରେ, ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ନା କଣ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ନା କଣ, ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ କେତେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ ଅଫ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମଷ୍ଟ ବି ଆପ୍ରୁଭଡ, okay, by both the house of the parliament within 1 month from the date of its issue. Okay, ଯେବେ ବି ତମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବୋଥ ଦ ହାଉସ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତମକୁ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, if এই কন্ডিশনটা মনে রাখো, এটা তিনটা জায়গা পাই সেম। ওকে, if the proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved, okay, যদি লোকসভা সেତେବେଳେ dissolve ହେଇଯାଇଛି or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha, okay, after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। আর মানে কোন তুমি ভাবো, ଏବେ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଓକେ, ଲୋକସଭା କେବେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା? ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ଭାବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସରକାର ନାହିଁ କାହାର ବି, ହେଲା, ଯଦି ସେ ଟାଇମରେ ତମକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇବାର ଅଛି, କଣ କଣ୍ଡିସନ? ୟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟିରେ, ତ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହବ? ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହବ, ନେକ୍ସଟ ଲୋକସଭା ଯେବେ ବି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବସିବେ, ମାନେ ଧର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଜୁନରେ, ଜୁଲାଇରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବସିବ ଲୋକସଭାର, ହେଲା, ସେ କଣ କହୁଛି, ତ କଣ ହବ ସେତେବେଳେ, ତାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ପାସ୍ କରାଇବାର ଅଛି ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ବିଲକୁ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିଥିବାର ଅଛି। ଓକେ, ବିକଜ ରାଜ୍ୟସଭା ତ କେବେ ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏନି, ରାଜ୍ୟସଭା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଛି। ତ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଆଇଦର ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନକୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି। ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଯେବେ ବି ଲୋକସଭା ବସିବ, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଯେବେ ବି ହବ, ଓକେ, ସେ ମାସେ ଭିତରେ ତମକୁ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ବିଲ୍, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ଭିତରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କଣ୍ଡିସନ। if approved, once approve ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଦି ଜାଗା ହାଉସରେ by the both the house of the parliament, the emergency continues for 6 months, 6 ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ, and can be extended to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months। okay, ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ କେତେ, ପୁରା indefinite period, national emergency indefinite period ପାଇଁ ଚାଲି ପାରିବ, but ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ତମକୁ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରାଇବାର ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। okay, it has to be approved by the parliament in every 6 months। okay, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ରୁଭ ହେଲେ ସେ 6 ମାସ ଚାଲିବ, 6 ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ରୁଭ କରାଇବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା, ପୁଣି 6 ମାସ ଚାଲିବ, କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ଼। ଓକେ, then however if the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuance, ଏଇଠି କଣ ହବ, ପୁଣି ସେ କଣ୍ଡିସନ, ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଛି 6 ମାସ ଚାଲି, ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ପୁଣି ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, କଣ ହବ ସେ, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha, okay, approved the continuation। सेम कंडीशन हम जोटा पढ़िथिले कि जदि लोकसभा पुणी डिजल्व हो जाउची, एडा मन रख, जदि लोकसभा डिजल्व हो जाउची तार फास्ट सिटिंग रो 30 दिन भितरे से तांको अप्रूव करार अछि, प्रोवाइडेड ता पूर्वरु राज्यसभा तार कंटिन्यूएशन को अप्रूव करथिबो। ओके, देन को मेजोरिटी रे पास होबार अछि, सेट तो हम पढ़िले स्पेशल मेजोरिटी। ओके, every resolution approving the proclamation of emergency or its continuation must be passed by either house of the parliament by special majority। okay, means को हले गोटे हाउस रे स्पेशल मेजोरिटी रे पास होबार अछि, या कहूनी जे both the house of the parliament by special majority, it must be passed by either house of the parliament by a special majority। okay, special majority कौन, a total member of a majority of the total membership of the house
and a majority of not less than two-third members of that house present and voting. The special majority provision was introduced in 44th amendment. Okay, माने two-third member present थिबार अछि आ total strength जेते तारो half रु अधिका voting तारो support रे हवार अछि. Okay, this is the special majority you need to pass the national emergency provision, okay, in either house of the parliament. तापर रिवोक केमदी हबो एटा हमें पास रो कंडीशन पढ़ देले जे गोटे मास भितरे तुमको वंस इश्यू हैला तार गोटे मास भितरे पार्लियामेंट रे पास करियार अछि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजॉरिटी रे पास करियार अछि जदि लोकसभा डिजॉल्व हे जाइछि ता पूर्वरु या तो लोकसभा से टाइम पीरियड भितरे डिजॉल्व हे जाउछि देन तार फर्स्ट सिटिंग रो गोटे मास भितरे तुमको लोकसभा रे पास करियार अछि प्रोवाइडेड ता पूर्वरु राज्यसभा ताकू पास करथियार अछि ओके दीज आर द कंडीशंस देन रिवोक केमदी हबो ओके ए प्रोक्लेमेशन हाँ आ गोटे कौन इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत चली पारिबो एवरी 6 मंथ्स रे तमे ताकू पार्लियामेंट रे पास करूथुबो ओके रिवोक केमदी हबो रिवोक माने तमे ताकू हटेबो केमदी ओके द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट at any time by a subsequent proclamation. Okay, such a proclamation does not require the parliamentary approval. Okay, देखो जेतलो तमे ताकू माने इमरजेंसी को अप्लाई करूछ सेते बेले तुमको पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार बट जेतलो हटौछ एटा मन रख विदाउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल रे भी ओनली प्रेसिडेंट रो गोटे कोन सब्सिक्वेंट आ गोटे प्रोक्लेमेशन रे जे आमे पार्लियामेंट को हटौछ ओके विदाउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल रे भी करि परिबो ओके further the president must revoke the proclamation if the lok sabha passes a resolution disapproving its continuation एटा गोटे कंडीशन कि विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल रे भी प्रेसिडेंट हटै परिबे सेकंड कंडीशन कोन जदि लोकसभा गोटे बिल पास करूची ओके कि से रिजोल्यूशन को अप्रूव करू नाही देन देन आल्सो प्रेसिडेंट रिवोक करि परिबे ओके एटा आउट कंडीशन सेकंड कंडीशन आउट कोन 44th amendment act रे आउट कंडीशन कोन आसला where 1/10 of the total member of Lok Sabha gives a written notice to the speaker or to the president. A special sitting of the house should be held within 14 days of the purpose of the propose of considering a resolution of disapproving the continuation of the proclamation. माने गोटे हला president without parliament ro what अप्रूवल रे भी हटै परिबे सेकंड होची जदि लोकसभा गोटे बिल पास कला कि आमे आ अप्रूव करिवुनी ताहले भी हटिबो थर्ड होची कोन जदि लोकसभा रो गोटे 1/10 मेंबर जेतके अछंती तार 1/10 मेंबर जदि गोटे नोटिस देले कि आकू तम हमकू या ऊपर किछ एक्शन नवर अछि देन आल्सो गोटे सिटिंग डका हबो ओके आउ तार डिसअप्रूवल पई प्रोक्लेमेशन पास करा हबो ओके a resolution of disapproval is different from approving माने हम जंत पढ़ले ना अप्रूवल और डिसअप्रूवल माने जतल तुम ताको रिवोक करूछो तार कंडीशन अलग अलग ओके the first one is required to be passed by lok sabha only while the second one needs to be passed by both the lok sabha and the rajya sabha माने रिवोकेशन पई केवल लोक सभा रे पास हेले हला किंतु जतल तुम प्रोक्लेमेशन को अलाउ करूछो सेतेले तुमको बोथ लोकसभा आउ राज्यसभा रो पास करियार अछि बिल ओके द रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन जतले कंटिन्यू करिया पई तमे चाहुचो सेतेले राज्यसभा और लोकसभा दी जगह तुमको बिल पास करियार अछि बट जतले तमे डिसकंटिन्यूएशन माने कंटिन्यू करिया चाहुनो सेतेले केवल लोकसभा रे बिल पास कले भी हला एटा गोटे कंडीशन सेकंड कोन द फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ओनली ओके जतले तमे रिवोक करूचो सेतेले केवल सिंपल मेजॉरिटी भी हे जिवो बट जेते तुम कंटिन्यू करूछ सेते तुमको स्पेशल मेजॉरिटी दरकार ओके बुझिलो अपन तो देन हम पढ़िबा तार इंपैक्ट कोन हला इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी यार इंपैक्ट कोन ब्रॉडली तुम देखिबा यार इंपैक्ट तीनटा वे रे लिखा हिची कि गोटे होची सेंटर स्टेट रिलेशन ऊपर कोन इंपैक्ट पड़े ओके आ गोटे इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि यांकर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कराई परिबो कि कोन आउ यार फंडामेंटल राइट्स ऊपर कोन इंपैक्ट ओके सिटीजन मानकर फंडामेंटल राइट ऊपर यार कोन इंपैक्ट फर्स्ट होची सेंटर स्टेट रिलेशन ओके याकू भी दी तीनटा हेडिंग रे देछि कि एग्जीक्यूटिव रिलेशन ऊपर कोन इंपैक्ट पड़िबो लेजिस्लेटिव इलेक्शन बॉडी ऊपर कोन इंपैक्ट पड़िबो हला ब्रॉडली हम देखिबा एग्जीक्यूटिव ऊपर कोन इंपैक्ट पड़िबो कि द स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर
though they are not suspended. Okay, एतकी मन रख बस कि एग्जीक्यूटिवली कौन हम स्टेट गवर्नमेंट को कम्प्लीटली सेंटर अंडर को अणाइଯିବ जदियो स्टेट गवर्नमेंट किसी सस्पेंड ହେଇନି. ओके माने एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल पास्ड बाय द सेंटर एट दैट टाइम व्हेन देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी. ओके लेजिस्लेटिव कौन इंपैक्ट पड़िबो the normal distribution of legislative powers between the center and state is suspended though the state legislatives are not suspended. Okay माने स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करा हुए नहीं नेशनल इमरजेंसी एतकी मन रख. ओके एई क्वेश्चन प्रीलिम्स रे आसे कंफ्यूजिंग कि स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करा जाए सस्पेंड हुए नहीं बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अच्छी ना कि जो किछिटा माने धर गोटे टॉपिक स्टेट लिस्ट रे अच्छी से इमरजेंसी टाइम रे कोन होबो सेंटर ता से टॉपिक ऊपरे या तो से सब्जेक्ट ऊपरे लॉ बनै पारिबो. Okay, then the law made by the parliament on the state subjects during national emergency become inoperative 6 months after the emergency is ceased. जो भी नियम सेंटर बने थी वो स्टेट लिस्ट को नेकी ओके 6 मास परे सेटा ऑटोमेटिक इनऑपरेटिव हे जिवो. ओके आउट कोन व्हेन the national emergency is in operation, the president can issue ordinances on the state subject also. Okay, if the parliament is not in session. गोटे तो होची जदि पार्लियामेंट सेशन रे अछि स्टेट रो कोनोसी सब्जेक्ट ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बनै पारिबो. जदि पार्लियामेंट सेशन नाही देन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस थ्रू रे स्टेट रो जे कोनोसी सब्जेक्ट ऊपर भी लॉ बनै पारिबे. ओके माने एटा ही कोन तुमको प्रूफ कला जे the normal distribution of legislative power between the center and state is suspended. Any state subject the center is eligible to make law. Okay बाकी नॉर्मल जिनस लिखा है तुम पढ़ो एते भी इंपोर्टेंट नहीं. बाकी फाइनेंस रे कोन गोटे हम देखले एग्जीक्यूटिव गोटे पूरा कंट्रोल हे जिवो सेंटर द्वारा. लेजिस्लेटिव रे कोन देखले कि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हबनी बट जो डिवीजन ऑफ पावर अछि सेटा सस्पेंड हे जिवो. ओके सब किछि पावर पळेबो सेंटर पाखु. फाइनेंशियल पावर रे कोन प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर्स टू स्टेट. ओके एबे हमर जो फाइनेंस कमिशन डिवाइड करूची कि एतकी पैसा सेंटर रो स्टेट को जिबा दरकार ए टैक्स रो एतकी परसेंटेज स्टेट को जिबा दरकार. ओके से जिंसटा आइदर कंप्लीटली और पार्शियली ओके प्रेसिडेंट ताको कमै परिबे या तो कंप्लीटली कैंसिल करि परिबे जे ए टाइम रे सेंटर तुमको एथि में पैसा दबोनी. ओके सेडा भी ही परिबो. तो बाय एंड लार्ज हम देखो स्टेट रो बहुत सारा पावर पळौ सेंटर पाखु बट गोटे जिंस मन रखि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड करा हुनी. ओके एनी नेशनल इमरजेंसी टाइम रे स्टेट रो लेजिस्लेटिव जो असेंबली अछि ताको सस्पेंड करा हुनी बट पावर सब सेंटर हाथ को पळौ. ओके नेक्स्ट कोन इफेक्ट of life of Lok Sabha and state legislative assembly. Okay, during emergency the life of Lok Sabha may be extended beyond its normal term, okay, of 5 years by law of parliament for 1 year at a time. Okay, however this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. माने धर एबे सरकार हमर बनला 2024 रे ये एंड हवा कथा 2029 रे. ओके लोकसभा 5 वर्ष पीरियड बट जदि 2028 रे धर इमरजेंसी लागला या 2029 जनवरी वाला को इमरजेंसी लागला तो लाइफ ऑफ लोकसभा को एक्सटेंड कराई पारिबो. ओके बट गोटे थर रे गोटे वर्ष पई माने वर्ष पई एक्सटेंड कराला जदि स्टिल इमरजेंसी आउरी माने सिचुएशन हटी एमदी हेइनी जे नॉर्मल हेइनी कि इमरजेंसी हटाई पारिबो तो पुणी लागि पारिबो. ओके बुझि पारलो तो गोटे गोटे वर्ष तुम ताको एक्सटेंड करि पारिबो बट however this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency ceased to operate. माने once तुम emergency को discontinue कर देला तार 6 मास भीतर तुमको इलेक्शन करी सरकार बनायार अछि. ओके ताटो अधिका टाइम हो तुम रखि पारिबोनी बट जो दिन जे इमरजेंसी चलीची लाइफ ऑफ लोकसभा रो टर्म को तुम बढ़े बढ़े चली पारिबो गोटे गोटे वर्ष. ओके the same situation for state also. Similarly, the parliament may extend the normal tenure of a state legislative assembly by 1 year at a time, okay, during national emergency, subject to the maximum period of 6 months once it is ceased. Okay, तो स्टेट रो गवर्नमेंट को भी तमे गोटे वर्ष बढ़े चली परिबो बट वंस इमरजेंसी तमर स्टॉप हैला विद इन 6 मंथ्स तुमको इलेक्शन करी कि सरकार बनायार अछि. ओके तो एटा पढले हमें सेंटर स्टेट रिलेशन. देन फंडामेंटल राइट ऊपर कौन इंपैक्ट. ओके आपको डील करूची आर्टिकल 358 और 359 एडा हम नेशनल इमरजेंसी पढछन जे आर्टिकल 352 हला बट 358
आउ 359 रे लिखा है कि फंडामेंटल राइट ऊपर तार इंपैक्ट कौन हो। आर्टिकल 359 डील करूची खास करी हमर आर्टिकल 19 माने आर्टिकल 19 सस्पेंड हबो ना नहीं ना कौन हबो। ओके हमर फंडामेंटल राइट केतेरु अछि 14 रु आरंभ करी कि 32 पर्यंत अछि हो ना नहीं। तो आर्टिकल 19 रे जो राइट अछि हमर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ताकू डील करूची आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 रे लिखा है जे आर्टिकल 19 सस्पेंड हबो केते हबो कोन नहीं। बाकी जति आर्टिकल रहिला 19 को छाडले ता ऊपर कोन इंपैक्ट पड़ियो सेडा को डील करूची आर्टिकल 359। ओके तो फास्ट देखिए आम इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 358। 358 कौन कौन ओके विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 19। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट। ओके तो या विषय लिखा है कोठी आर्टिकल 358 ये कौन कौन व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड द 6 फंडामेंटल राइट्स ओके अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जदि नेशनल इमरजेंसी लागिला आर्टिकल 358 कहूची जे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जिवो। ओके तो तमरो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो अछि 6टा और सेटा रहइबोनी बुझि पारलो सिंपली एतिकी तमे एतिकी मन रखो आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी। ओके सेमिति आर्टिकल 19 कोन हो ऑटोमेटिक रिवोक भी हिजो व्हेन देयर इज ए सीज ऑफ इमरजेंसी। देखा एले खाइची व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट माने जतले नेशनल इमरजेंसी डिसकंटिन्यू होला या माने हम तो रिवोक कर देले आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव्स एंड कम्स इनटू फोर्स। ओके जेमिति कि नेशनल इमरजेंसी लागला माने आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हबो सेमिति नेशनल इमरजेंसी सरला माने आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली माने फोर्स को आसीबो ता पई एक्स्ट्रा किछि प्रेसिडेंट रो प्रोक्लेमेशन या तो किछि भी दरकार नहीं सिंपल हला एतिकी मन रखियार अछि। Firstly, the 6 fundamental rights under Article 19 can be suspended only when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression and not in the ground of armed rebellion. एठी गोटे कैच कोन आमर तीनटा कंडीशन थिला नेशनल इमरजेंसी पे हना नहीं वार एक्सटर्नल एग्रेशन आउ आर्म्ड रिबेलियन। तो केवल वार आउ एक्सटर्नल एग्रेशन रे ही तमर आर्टिकल 19 सस्पेंड हबो ऑटोमेटिकली। ओके बट नॉट इन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन बुझि पारलो केवल वार आउ एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं तमर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हबो आर्म्ड रिबेलियन ग्राउंड रे सस्पेंड हबोनी बुझि पारलो। सेकंड होची आर्टिकल 359 जोड़ा हम देखिले आर्टिकल 19 छोड़ा बाकी जो फंडामेंटल राइट अछंदी तांकर कंडीशन कोन ताकू किए डील करूची आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 रे लिखा हिची जे बाकी जति फंडामेंटल राइट रहिला 19 को छाड़ी से माने केमती माने डील करिवे ताकू सस्पेंड हेबे ना नहीं ना कोन हबो। ओके एटी कोन डिफरेंस दिस मींस अंडर आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड। Okay, that means what? The rights are theoretically alive, but right to seek remedy is suspended. Okay. Now, kono? The suspension order may extend to the whole or the part of the country. It should be laid before each house of the parliament for approval. Okay. It kono bujhilo? Article 359 को उची, okay? जे 19 छड़ा बाकी सब फंडामेंटल राइट रो एग्जीक्यूशन केवल सस्पेंड हबो। ओके बाकी सब राइट्स दे वेर अलाइव बट जदि से राइट को वायलेट करूची किए तमे ता अगेंस्ट जाइकी कोर्ट रे अपील कर परिबोनी। ओके राइट्स तमर अछि माने किछि सस्पेंड हेइनी केवल 19 सस्पेंड हे गला तमर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सस्पेंड हे गला तमे जोड़ा छोड़ा जो कहि परथलो कहि परिबोनी बाकी तमर सब फंडामेंटल राइट अछि बट जदि सेटा वायलेट होउची देन यू कैन नॉट सीक ए लीगल रेमेडी। ओके तो एटा एथु कोन जानलो 19 हला सस्पेंड बाकी सब राइट्स तमर रहिला बट तारो एग्जीक्यूशन या तो एनफोर्समेंट तुम कहि परिबो सस्पेंड हला। ओके एंड द सस्पेंशन ऑर्डर जो आसीबो सेटा होल और पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके तमे जदि से सस्पेंशन ऑर्डर इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट it can be extended to the whole of the country or it can be extended to the part of the country. ओके आउ एटा को तमे सस्पेंड करिया पई जदि तमे चाहछो धर आर्टिकल 20 को सस्पेंड करिया में ओके देन तुमको पार्लियामेंट रा अप्रूवल दरकार 19 कोन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो बट तुम जे चाहछो आर्टिकल 25 को सस्पेंड करिया में ओके देन तुमको पार्लियामेंट रा अप्रूवल दरकार बुझ परलो क्लियर जदि किसी डाउट अछि पचारो माने को आर्टिकल डील करूची मन रखिया दरकार नहीं खाली एतिकी मन रखो जे
नेशनल इमरजेंसी टाइम रे को आर्टिकल सस्पेंड होउची कोडा सस्पेंड होउनी कोडा ऑटोमेटिक होउची कोडा पे अप्रूवल दरकार 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जाउची बाकी जेते आर्टिकल रहिला फंडामेंटल राइट्स तमर रहिला बाकी सब रहउची बट तार एनफोर्समेंट सस्पेंड हे जाउची ओके जदि गोटे स्टेटमेंट थिबो कि एवरी ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी देन इट इज रॉन्ग ओके देन एटा तुम पढ़ी दबो जहाँ मु तुमको बुझेली सेडे ही लिखा है ओके देखो आर्टिकल 358 रे कोन अछि it confined to fundamental right under article 19 only whereas article 359 extends to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order okay 19 टा ऑटोमेटिक सस्पेंड हे जिवो बाकी को भी आर्टिकल को सस्पेंड करिया पे तुमको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दरकार ओके नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आउ गोटे कौन होची देखो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 as soon as the emergency declared on the other hand article 359 does not automatically suspends the fundamental rights it only empowers the president to suspend the enforcement of the specified fundamental rights okay माने कोन 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हे गला बट बाकी सब फंडामेंटल राइट्स तमर अछि प्रेसिडेंट जोटा चाहिए सेटा को से सस्पेंड करि परिवे एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओके और जो पर्टिकुलर राइट चाहिए से पर्टिकुलर राइट ही सस्पेंड हबो दैट्स इट बुझि पारलो तो इथरु तमे दि तीन जिंस मन रखियार अछि जे सबु फंडामेंटल राइट तमर इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड होउनी ऑटोमेटिकली ओके 19 को छाडले बाकी सब लाइव होउची सबु जोटा तांको लागिवो सस्पेंड करियार अछि सेडा को सस्पेंड करिवे ओके बाकी सबु गुडा एते इंपोर्टेंट नाही एटा तमे देखि दबो ओके तुमको ब्रॉडली जोटा दरकार मु तुमको कहि देली सेतकी तुम मन रखो ओके आ एटा गोटे मन रखियो ए टर्मडा ए दि तीन थर पचारलाणी एग्जाम रे कि केते थर नेशनल इमरजेंसी इंडिया रे टोटल लागि छि आज पंत 62 रे लागितिला चाइनीज एग्रेशन पई 71 रे लागितिला इंडिया पाकिस्तान वार पई आ 75 रे लागितिला इंदिरा गांधी द्वारा बाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रीजन देखैकी ओके ताकू काउंटर करिया पई ही 44 अमेंडमेंट एक्ट रे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन अना हला ओके देन गोटे आम सारे नेशनल इमरजेंसी ओके एबे पढ़िया प्रेसिडेंट रूल देन तार बोथ रो कंपैरिजन देन फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो समस्त को नेशनल इमरजेंसी क्लियर बेसी किसी टफ नहीं किछरा मन रखे जिंस अछि किछरा बुझे जिंस अछि दैट्स इट ओके एटा तुम रिवीजन होउची तुम पढ़ी के आसीथिबो जदी बुझा पड़िबो तुम जदी किछि पढ़ी नथिबो देन तुमको बुझा पड़िबो ओके सेतमें कोउची जे तुम आगुरु पढ़ी के आसो देन प्रेसिडेंट रूल ओके कोन ग्राउंड कोन आर टाइम लिमिट ओके आ इथरे कोन कोन इंपैक्ट हुए केमति कोन देखिया सेडा पढ़ले 352 ओके एडा होची हमर 355 कोउची imposes a duty on the center 355 कोन कोउची कि केमिति सेंटर स्टेट ठीक रे चलिया कथा ओके it imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution article 355 कोउची तो नेक्स्ट आर्टिकल 356 कोउची जदी चालुनी okay in accordance with the constitution provisions of the constitution then there is a emergency situation then what to do okay it is the duty in the performance of which the center takes over the government of the state under article 356 okay in case of failure of constitutional machinery in the state okay 355 रे कुआ होची कि how the center should ensure that the states every state are carried on in accordance with the provision of the constitution तो जदी सेटा होउनी देन आर्टिकल 356 कोची how state can ensure okay proper what continuation of constitutional machinery in a state through some kind of precedent rule okay the precedent rule can be proclaimed under article 356 on two grounds okay गोटे होची आर्टिकल 356 रे लिखा आइची आ गोटे होची आर्टिकल 365 रे लिखा आइची दीटा ग्राउंड रे तमर प्रेसिडेंट रूल लागि परियो गोटे कोन if he is satisfied that the situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution मान जदी लागिला कि constitution को follow करूनी state government okay constitution रो against काम करूची then under article 356 president rule can be declared
आउ गोटे कंडीशन कौन आर्टिकल 365 रो कि whenever a state fails to comply with the comply with or to give effect to any direction from the center. Okay, center किछि गोटे करिया पे कहूची constitutional provision under रही कि आ state ताको follow करूनी, then also precedent rule can be declared under article 350 365. Okay, so there are two conditions, and for two conditions there are two articles. article 356 कहूची जे जदी कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रोविजन अच्छी से अनुसार स्टेट चालूनी, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल. आर्टिकल 365 कहूँ जदि स्टेट सेंटर को फॉलो करूनी, ओके, सेंटर रो किसी डायरेक्शन सहित कंप्लाई करूनी, देन आल्सो प्रेसिडेंट रूल स्टेट रे इम्प्लाई हे परिबो. ओके, दीटा कंडीशन. देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन कौन से आम देखी नेशनल इमरजेंसी पे गोटे मास भितर तुमको अप्रूव करार अच्छी. ओके, ये कौन प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदिन 2 months. ये डिफरेंस मन रख, से मासे दरकार थिला, ये 2 मास. ये भी बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तुमको दरकार. ओके, एक्सेप्ट करिया पई, बट सेट थिला स्पेशल मेजॉरिटी. ये आम आगु जाके देखिबा, ये सिंपल मेजॉरिटी दरकार. ओके, से मासे भितर अप्रूव होबार थिला, ये 2 मास दरकार है, 2 मास भितर तुमको अप्रूव होबार अछि. बाकी सेम कंडीशन जदि से समय लोकसभा डिजल्व हो जाइए, ओके, या तो से समय से जो मासे टाइम भितर डिजल्व हो गला माने से जहाँ पड़ते ये से कि लोकसभा फास्ट सिटिंग जो हम तापर से 30 दिन भितर अप्रूव होबार अच्छी, प्रोवाइडेड राज्यसभा ता पूर्व अप्रूव करथियार अछि. ओके, सेम कंडीशन, केवल डिफरेंस होची से मासे भितर, ये 2 मास भितर. सेकंड कंडीशन कौन, से स्पेशल मेजॉरिटी, ये सिंपल मेजॉरिटी. ओके, इतकी डिफरेंस बस मन रख, बाकी अप्रूवल ड्यूरेशन रे किछि फरक नहीं हैला. आउट फरक कौन से थिला, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months. ओके, then it can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of the parliament every 6 months. सेठी कौन थिला, indefinite period पर्यंत तमर चली परिबो नेशनल इमरजेंसी. ओके, प्रति 6 months रे से अप्रूव होतुबो. एठी कौन प्रति 6 months रे अप्रूव होतुबो, बट मैक्सिमम 3 वर्ष चली परिबो. इंडेफिनेट पीरियड पर्यंत तुम गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लगे परिबोनी. ओके, फॉर एग्जांपल सेंटर जदी प्रेसिडेंट रूल लगेला धर ओडिसा रे, तो 3 वर्ष भितर तुमको कोड ना को गोटे सॉल्यूशन को आसिकी गवर्नमेंट फॉर्म करिकी तुमको प्रेसिडेंट रूल हटायर अच्छी. तुम इंडेफिनाइट पीरियड 10 वर्ष 15 वर्ष पर्यंत तुम प्रेसिडेंट रूल लगे पारिबोनी, बट नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनाइट पीरियड. ओके, एटा गोटे डिफरेंस मन रख. ओके, एटा गोटे इंपोर्टेंट डिफरेंस. हाँ, आउ गोटे कौन, जदि एटार पीरियड है 3 वर्ष, ये गोटे पॉइंट मन रख कि जदि द 44th Amendment Act of 1978 introduced a new provision to put a restraint on the power of the parliament to extend a proclamation of president rule beyond 1 year. जदि गोटे वर्ष पर तुम एक्सटेंड करिया चाहूछ, मैक्सिमम पीरियड 3 वर्ष, बट जदि गोटे वर्ष पर तुम एक्सटेंड करिया चाहूछ प्रेसिडेंट रूल, देन ए दीटा कंडीशन रु कोहले गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होतुवार अछि. ओके, कौन फास्ट कंडीशन कि देशर को गोटे जगह नेशनल इमरजेंसी लागिथिवार अछि. जदि लागिछि धर ओडिसा रे तुम प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करिया चाहूछ, देन को गोटे पार्ट रे देशर प्रेसिडेंट माने नेशनल इमरजेंसी लागिथिवार अछि, ताहले तुम गोटे वर्ष पर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करि परिबो. सेकंड कंडीशन कौन, इलेक्शन कमिशन जदि सैटिस्फाई हैला कि कोनोसी भी कंडीशन रे एठी इलेक्शन करि होबोनी, इलेक्शन करिया पई जो सिचुएशन दरकार सी एपन नॉर्मल हेनी, ताहले भी तुम प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करि परिबो. जदि ए दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करूनी, देन गोटे वर्ष रु बियॉन्ड तुम आउ प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करि परिबोनी, तुमको डिस्कंटिन्यू करियार अछि. बुझि पालो, मैक्सिमम पीरियड 3 मास सॉरी 3 वर्ष, बट गोटे वर्ष पर ए दीटा कंडीशन रु कोहले गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होतुवार अछि. राइट, देन कॉन्सिक्वेंसेस कौन है, से जमी पढ़ले सेंटर स्टेट रिलेशन रे कौन आसीबो. ओके, स्टेट आउ सेंटर रो जो हमर अछि लाइफ टाइम ता ऊपर कौन आसीबो, देन फंडामेंटल राइट ऊपर कौन आसीबो इंपैक्ट. तो ये सेमती पड़िबा कॉन्सिक्वेंसेस कौन. ओके, द प्रेसिडेंट एक्वायर्स the following extraordinary powers when the president rule is imposed on the state. Okay, तुम जानि छो मोस्टली सब पावर प्रेसिडेंट हाथ को पळेबो. तो दी तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो कोन हो. ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव बॉडी. सब पावर पळेबो प्रेसिडेंट पाखु. ओके, प्रेसिडेंट मींस व्हाट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, he can declare the powers of the state legislatures
he can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament. President declare kari paribe je state legislature jo power ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା parliament ତାକୁ execute କରିବ. Okay, he can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provisions relating to any body authority in the state. Okay, ଯେକୌଣସି constitutional provision କୁ ବି suspend କରିବାର power ସେ ନେଇପାରିବେ. Okay, therefore ଏଇଟା ମନେ ରଖ, when the president rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of ministers headed by the chief minister. Okay, माने जदि प्रेसिडेंट रूल लागिला फॉर एग्जांपल ओडिशा जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छी सी डिसमिस हो फास्ट रे. ओके, बट द स्टेट गवर्नमेंट इज नाइदर सस्पेंडेड नॉर डिजॉल्व. ओके, फर्दर द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड्स और डिजॉल्व्स द स्टेट गवर्नमेंट, आइदर माने करि पारिबे. किंतु प्रेसिडेंट रूल लागिला माने स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हे जिवो डिजॉल्व हे जिवो सेमति नाही. मन रख, केवल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हेबे. ओके, बट द प्रेसिडेंट कैन आइदर सस्पेंड और डिजॉल्व से करि पारिबे, बट ऑटोमेटिक हबनी सेटा. ओके, तो कंडीशन कोन, प्रेसिडेंट रूल लागिले केवल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हेबे. ओके, देयर इज नो सस्पेंशन और डिजॉल्व ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द प्रेसिडेंट कैन डू इट. ओके, तो सेटा लागिले कोन हबो, तार देछि व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव इज जस्ट सस्पेंड और डिजॉल्व माने कोन हबो, एटा तो तुम जानि છો, एटा इजी इजी पढ देबो कि जो पावर अछि से सब पळेबो प्रेसिडेंट पाखु और पार्लियामेंट पाखु. ओके, आ किछि बड़ जिंस नाही. A law made by the parliament or president or any other specified authority continue to be operative even after the president rule. एटा मन रख कि प्रेसिडेंट रूल हटिला परे भी जो लॉ या तो जो एक्ट बनै थिबे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सेटा ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हबनी. ओके, प्रेसिडेंट रूल परे भी से लॉ कंटिन्यू हबो जो पंत स्टेट ताकु माने व्हाट ताकु से लॉ को डिसमिस न करिछि. ओके, ताकु जो पर्यंत री एनैक्ट न कराइछि तो रिपील न कराइछि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, से पर्यंत जो भी लॉ पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट बनैथिबे से कंटिन्यू चलथिबो. ओके, प्रेसिडेंट रूल परे भी. It should be noted that here that the president cannot assume to himself the powers vested in the concerned state. हाँ, आउट कंडीशन कोन, एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रख, सबु स्टेट रो पावर पळेबो प्रेसिडेंट या तो पार्लियामेंट पाखु एक्सेप्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, जो पावर हाई कोर्ट रो अछि सी सस्पेंड हबोनी कि तार कोनोसी भी पावर प्रेसिडेंट निज पाखु नै परिबनी. प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर्स वेस्टेड इन द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट्स और सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट. ओके, माने हाई कोर्ट एज यूजुअल फंक्शन करिवो एक्सेप्ट हाई कोर्ट जो लेजिस्लेचर अछि, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी अछि, सेमानकर सब पावर पळेबो प्रेसिडेंट पाखु. ओके, और पार्लियामेंट पाखु. यूज ऑफ 356 एटा बहुत थर यूज हेछि. ओके, 1950s रू भी आर यूज स्टार्ट हे गलानी, बहुत थर यूज हेछि, किंतु नेशनल इमरजेंसी केवल 3 थर यूज हेछि. ओके, एति मन रखो, बस एति की ही प्रेसिडेंट रूल रे. देन ए टेबल टा होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके, ए कंपैरिजन टा तुमको मन रखियार अछि, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट प्रेसिडेंट रूल विषय कोन कोन फरक. ओके, देखो एटा पढ़ देले आमे जहा एबे पर्यंत पढ़िले ताको एटी समराइज कराई छि. ओनली डिफरेंस को समराइज कराई छि. डिफरेंस तुम जानले जानिबो जे सेठी कोन होछि एटी कोन होछि. ओके, एटा पॉइंट बाय पॉइंट देखि देबा जति डिफरेंस अछि. नेशनल इमरजेंसी कोन, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया or a part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion. State emergency कोन, it can be proclaimed when the government of the state cannot be carried out in accordance with the provision of the constitution or okay may not have any connection with माने यार war, external aggression, armed rebellion से तो किछि कनेक्शन नै. ये केतळ प्रेसिडेंट रूल लागे when there is a discontinuation of provision of the constitution in the state. Okay, ये केतळ लागे war, external aggression or armed rebellion. Okay, गोटे पॉइंट हला. सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज पावर्स असाइन टू देम. एटी स्टेट रो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर फंक्शन ऊपर कोन इंपैक्ट नै. ओके, द सेंटर गेट्स कंकरेंट पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट. माने स्टेट रो भी पावर अछि, बट स्टेट लिस्ट रे जो भी सब्जेक्ट अछि ता ऊपर लॉ बनायार पावर सेंटर पाखु भी पड़ू. बट प्रेसिडेंट रूल समरे कोन हुए. ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हेले आमे भी पढ़ले एंड they are either suspended or dissolved by the president. Okay, president can either suspend or dissolve them.
the president administer the state through the governor. Okay, state ro pura mane pura power पड़ोची president पाखुकु. Okay, I mean parliament पाखुकु. Parliament can make law in the state. In brief, the executive and legislative power of the state are assumed by the center. Okay, national emergency सेमती होउनी. केवल स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी ता ऊपर लॉ बनायार पावर पार्लियामेंट पाखु जाउछ. दीटा डिफरेंस जानलो. थर्ड, अंडर द national emergency, the parliament can make law on the subject enumerated in the state list only by itself, that it cannot delegate the same to anybody or any authority. Okay, dei pariboni, si nije hi banebo, but eiti kono si seta delegate kari paribo au janu. Okay, the parliament or the president, the state president or any other authority specified by him. Okay, se power ta delegate hei paribo je au ki bi law banai paribo. Okay, so far the practice has been for the president to make law for the state in consultation with the members of the parliament from that state. Okay, such law are known as president's acts. Third difference जानलो. Fourth कोण, there is no maximum period prescribed for this operation. 83 वर्ष maximum period prescribed कराइछ. Okay, एटा indefinite period पण चली परिबो, एटा 3 वर्ष. आ एटा कोण, it can be indefinitely with the approval of the parliament every 6 months. एटी भी तमे every 6 months रे approve करिवो, but गोटे वर्ष पर जदि तमे कंटिन्यू करियो चाहछो, there are two conditions. Okay, next fifth condition कोण, fifth difference कोण, under this the relationship of the center with all the states undergoes a modification. national emergency लागिला, एटी कोण जो स्टेट लागिवो केवल से स्टेट सहित ही तम रिलेशनशिप टा चेंज हबो. Okay, sixth कोण, every resolution of the parliament approving its proclamation or its continuation must be passed by special majority. Okay, एटी कोण, तमे जदि कोडे प्रेसिडेंट रूल लगायर अछि को स्टेट रे, तो सेही प्रोक्लेमेशन टाकू तमे सिंपल मेजॉरिटी रे पार्लियामेंट रे पास करबो. एडी स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नेशनल इमरजेंसी पई, प्रेसिडेंट रूल पे सिंपल मेजॉरिटी दरकार. ओके, नेक्स्ट कोन, एडी फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट पडुची. ओके, हम जेम देखले 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाउची, बाकी पई प्रेसिडेंट सस्पेंड करे पडुची. एडी फंडामेंटल राइट्स तार किछि लिंक नै. प्रेसिडेंट रूल हैज नो लिंक विथ एनी फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एडा मन रखो इंपोर्टेंट. ओके, during president rule no fundamental right is suspended or there is no link with any fundamental right. Okay, no impact. Then tar revocationpai kono, lok sabha can pass a resolution for its revocation. Okay, lok sabha jodi gote resolution pass kar dala, then president must revoke. Eti kono, there is no such provision, it can be revoked by the president only on its own. Eti lok sabha kichi taku president rule revoke kariya pai kichi pass kariya darkar nei, bill fill simple majority re bi. Okay, president जेतला चाहिए directly से revoke कर देबे president rule. Okay, so these are the 8 differences. अब 8 table रो ही तमरो क्वेश्चन आसीबो. तमरो जति क्वेश्चन आसीबो ए 8 जो पॉइंट अछि ना, ए पॉइंट जे तुम मन रखी गलो, then it will be enough. Okay, then एडो सो स्टोरी लिखाई छि केबे कोन हेतिला, को गवर्नमेंट करथिला. Okay, these are not required. तमे जस्ट पढो गोटे जानिया पई. ओके, ताकि मेंस आंसर राइटिंग रे तुमको हेल्प हबो. आ एथिर गोटे केस अछि एसआर बुमाई केस. से केस टाको मन रखिथिबो. से केस रे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट भी मन रखिथिबो. ओके, कोर्ट मेंशन हेतिबो देखिबो एसआर बुमाई केस. से केस टा इंपोर्टेंट इन तुमको एडी अछि देखो, तुमको आंसर राइटिंग रे एटा को मेंशन करियार अछि. इफ देयर इज ए क्वेश्चन ऑन इमरजेंसी, ओके, और प्रेसिडेंट रूल इन मेंस, देन तुमको डेफिनेटली एसआर बुमाई केस को मेंशन करियार अछि. एसआर बुमाई केस रे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट को तुमको मेंशन करियार अछि. ओके, एसआर बुमाई केस सुप्रीम कोर्ट कोन कोन कहिथिले with respect to president rule. Okay, की president rule is under judicial review. Okay, then कोन तार चेक करा हबो से भितरे. ओके, सुप्रीम कोर्ट कोन चेक करिवो एडा सब लिखाई छि, रेडी देखि दबो. ओके, then proper और improper use of president rule माने को ग्राउंड रे तुमे president rule लगेई परिवो, को ग्राउंड रे president rule लगेई परिवोनी, तार कंडीशन अछि. ओके, imposition of president rule in a state would be proper in the following situation. ए जो ग्राउंड गुडा अछि, ए ग्राउंड रे जो तुम president rule लगेइलो, then it will be proper. आउ केतरा ग्राउंड अछि जो ग्राउंड रे किछि स्टेट लगेई दियंदी, जदि ए ग्राउंड रे तुम लगेइलो then it is improper. ओके, तमरो मंथिवो 2017-18 एडे गोटे president rule लागितला उत्तराखंड रे, and Supreme Court has declared it as unconstitutional. Okay, and तार president rule को हटाइतिला. Okay, and government को सेठी सुप्रीम कोर्ट माने वार्निंग भी देइथिले कि यू कैन नॉट इंपोज प्रेसिडेंट रूल
in this kind of conditions. Okay, Uttarakhand case पढ़ी के देखियो तो एटा होची कंडीशन तीन चारटा जो अछि केता छटा तुम खाली एडा मन रख जे को कंडीशन रे प्रेसिडेंट रूल लागि परियो कोडा प्रॉपर कंडीशन ताहले ऑटोमेटिक तुमको इम्प्रॉपर कंडीशन मन रहि जिवो देखो गोटे दिन हम कहि दोछि where after general election to the assembly no party secures a majority that is hung assembly a condition ne president rule laga hi paribo. Okay, this is a correct condition where the party having a majority in the assembly declines to form the ministry and the governor cannot find a coalition ministry a condition ne bhi president rule laga hi paribo. Third kono where a ministry resigns after the defeat of the assembly and no party is willing to able to form the government it bhi lagai paribo. Where a constitutional direction of the central government is disregarded by the state government eta to article 350 365 ହେଲା directly ଏଠି କରିପାରିବ ସେମିତିଆ ଛଅଟା condition କୋଉଟେ କରିପାରିବନି ଦେଖ where a ministry resigns or is dismissed on a losing majority support of the assembly and the governor recommends imposition of president without probing the possibility of forming a alternate ministry जदि धर गोटे सरकार भांगी गला गवर्नर ड्यूटी होची सी देखिबे अल्टरनेट आउ के फॉर्म करि पारुची कि अलगा पार्टी मानको से इन्फॉर्म करिवे कि you come and prove your majority without informing if you are imposing a president rule then it is improper. Okay, जदि धर बे फॉर एग्जांपल मु कहूची कि सेंटर रे जो पार्टी रो सरकार अछि धर सेही पार्टी रो सरकार कोडे स्टेट रो अछि आ कोन से कारणरू स्टेट रो सरकार भांगी गला तो जी गवर्नर अच्छी ओबियसली से सेंटर रो जने कौन तांको लिंक रो लोक सी अपोजिशन पार्टी रो विदाउट कंसल्टेशन रे जदि प्रेसिडेंट रूल लगेले then it is not proper it is improper. The governor must consult other parties or other coalitions to prove their majority. Okay, without consulting if he is declaring or she is declaring a president rule then it is improper. बुझिपारला तो तीन चारटा कंडीशन एटा एते इंपोर्टेंट नहीं बट जस्ट जानी था. ओके देन फाइनेंशियल इमरजेंसी एटा ए ऊपर केबे क्वेश्चन आसीनी बट स्टिल यू रिमेंबर जस्ट दी तीनटा पॉइंट कि 360 आर्टिकल रे अछि. ओके आउ तार कोन ग्राउंड कोन इफ द प्रेसिडेंट satisfied that situation has arisen due to which financial stability or credit of India or any part of it is threatened. Okay, jodi financial related kiछि भी instability asila for example there is a kind of recession, okay, or there is a kind of high inflation for example तुम जानथिबो recently श्रीलंका रे जो प्रकार financial crisis हला. Okay, and there was a financial crisis in one of the South American country. Okay, श्रीलंका recent example मनथिबो कोहला लोक प्रेसे माने क्षीर नॉर्मल जिंस पई माने कोन 3 डिजिट वाला इन्फ्लेशन हे गला. ओके, पेट्रोल हे गला 5000 टका लीटर. ओके, क्षीर हे गला 800 टका लीटर. माने एवला सिचुएशन हेतिला जो प्रेसिडेंट रो घर भितर सब अटैक करले जाय कि प्रेसिडेंट भागी पळेले तो से काइंड ऑफ से जदी टाइप रो सिचुएशन आसिला फाइनेंशियल सिचुएशन then this is called as financial instability kind of situation. Okay, और जदि देश हमर बहुत पळेला डेट रे जेमति हमर 1991 रे सिचुएशन हेतिला. ओके, सेतेल भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना हंदी बट मु कहूची फॉर एग्जांपल जदि से टाइप रो तमे सिचुएशन को पळेलो then the president if he satisfied or she satisfied then he or she can declare financial emergency. Okay, एटा मन रखा आज पर्यंत इंडिया रे केबे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेनी. ओके, then approval kono the proclamation declaring financial emergency, okay, must be approved by both the house of the parliament within 2 months जोटा कि हमर प्रेसिडेंट रूल पे भी थिला. गोटे मिनिट ओके जेमति हमर प्रेसिडेंट रूल पे थिला सेमति फाइनेंशियल इमरजेंसी पे भी 2 मास भीतर तुमको अप्रूव करियर अछि. ओके, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे 1 मंथ इज ओनली फॉर नेशनल इमरजेंसी हला. बाकी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे तुमको 2 मास भीतर both the house of the parliament रे अप्रूव करियर अछि. ए कंडीशन दा सेम. ओके, इफ द लोकसभा dissolves and all
देन 30 डेज भितर तुम तार फास्ट सिटिंग 30 डेज भितर तुमको अप्रूव करार अच्छी एंड मीन टाइम राज्यसभा तुम अप्रूव करथियार अच्छी ओके once up to by approved by both the house of the parliament the financial emergency continues indefinitely till it's revoked okay so it is like national emergency indefinite period पर्यंत ये चलिबो जो पर्यंत सी रिवोक कराइनी ओके ताको डिसकंटिन्यू कराइनी so there is no maximum period is prescribed for its operation and repeated parliamentary approval भी आपे दरकार नहीं okay repeated parliamentary approval national emergency पे दरकार and president rule पे दरकार okay repeated माने every 6 months रे हैला बट फाइनेंशियल इमरजेंसी पे किसी अप्रूवल दरकार नहीं गोटे थर तुम लगेल इट इज इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत चलला जेबे जे तुम ताको हटेन ओके आउ केवल सिंपल मेजोरिटी रे तुम ताको पास करियार अछि किछि आपे स्पेशल मेजोरिटी भी दरकार नहीं ओके स्पेशल मेजोरिटी का पे दरकार को इमरजेंसी पे तुमको स्पेशल मेजोरिटी रे पास करियार अछि आइदर हाउस रे नेशनल इमरजेंसी यस आ स्टेट प्रेसिडेंट रूल पे केवल सिंपल मेजोरिटी ओके सेमते फाइनेंशियल इमरजेंसी पे केवल सिंपल मेजोरिटी A proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. Okay? यहाँ पे कौन सी repeated approval भी दरकार नहीं और ये indefinite period पर चलिबो यहाँ पे कौन सी लोकसभा रे resolution भी पास हेबा दरकार नहीं जे यार revocation ପାଇଁ ओके प्रेसिडेंट जेतलो चाहिबे सेतलो ताकू रिवोक करि परिबे डिसकंटिन्यू करि परिबे ठीक अछि एन यार इंपैक्ट भी सेते इंपोर्टेंट नहीं देखि दबो टिके खाली ओके केमदिया कौन टैक्स वाला आउ केमदिया कौन जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हबो एते इंपोर्टेंट नहीं केबे ऊपर क्वेश्चन आसीनी ओके मु भी आको केबे पढ़ी नहीं पाबी देन क्रिटिसिज्म वगैरह किछि तुमको दरकार नहीं हला कि कौन क्रिटिसिज्म करथिला एडा किछि दरकार नहीं तुमको ओके ये आर्टिकल टिके टिके मन रखियो किछि आर्टिकल इतने इंपोर्टेंट ओके 352 इंपोर्टेंट देन then 356 important 5 be important okay then 358 359 important okay it 19 article 19 केमती सस्पेंड करा होची ऑटोमेटिक बाकी फंडामेंटल राइट केमती सस्पेंड होची आर्टिकल 359 रे ओके देन 360 होची तमरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गोटे आर्टिकल मन रखियो 365 हैला एटा भी गोटे कंडीशन प्रेसिडेंट रूल पई ओके दैट्स इट चैप्टर आम पूरा पढ़ले मु किसी क्वेश्चन करनी या है काली जो आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा से मुझे या भी क्वेश्चन तुमको देवी किसी क्वेश्चन या भी देती है काली कौन अच्छी देख मे बी प्रेसिडेंट गवर्नर थी या तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन थी तुमको जनइबी ओके काली किसी माने जो भी चैप्टर अच्छी से या कला लास्ट यार क्वेश्चन डिस्कस करदे ठीक अच्छे कार किसी डाउट समस्त बुझिल ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ରିଭାଇଜ କରିଦିଅ ଓକେ ହଁ କୁହ କିରଣ सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ डिफरेंस बुझबानी सेटा आउट क्लास रे बुझाई थिला आई थिंक हम फिर भी बुझिबार नहीं है ओके तमे थरे पढो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर ओके मान तारो मेन डिफरेंस सर कुह हाँ सेटा सर आज पढ़ुतली से जे आर्टिकल 21 रे गुटे लेखा है जे जोटा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सेटा डिप्राइव हे परबो जे पर्सनल लिबर्टी को सेटा मु बुझी पारलिनी देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ माने जहा माने लेखा है माने धर गोटे जिनस लेखा है कि तुमको ए भाया प्रोसीजर फॉलो करार अछि ओके देन यू सिंपली फॉलो द प्रोसीजर धर गोटे एक्ट है माने फॉर एग्जांपल मु कहूची हमर मोटर व्हीकल एक्ट अछि एमवीए ओके कि लेखा है जे जदि जने हेलमेट पिंधिबोनी ताको 500 टका फाइन पड़ियो हैला एटा होची प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लॉ होची एमवीए एक्ट सेथिरे जो प्रोविजन लेखा है तमे ताको सिंपली फॉलो कलो प्रोसीजर व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ओके माने तुमको लेमन टर्म रे बुझा पे मु जस्ट कहूची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने कोन कि जो लॉ बना है माने जो लॉ बना हला धर जने सुप्रीम कोर्ट को गला चैलेंज कला जे सर जो मु हेलमेट पिंधि नथिली 500 टका फाइन देबो पड़ला जदि सुप्रीम कोर्ट चेक करिवो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देन सुप्रीम कोर्ट केवल एडा देखिवो
जे ए जो 500 टका फाइन अमाउंट एटा जो लॉ बना है जो रूल करा है सितरे मेंशन अछि ना नहीं जदि अछि then they will not check anything, they will tell ki yes you have to pay the fine because it is mentioned in the law. Okay, it was simply procedure established by the law. Due process of law माने if you are challenged माने तुम जे चैलेंज कलो कि सर मु हेलमेट पिंधि नथिली 500 टका मु देबिनी मु 200 टका देबी, then supreme court check करिवो when the law is formulated whether the intention behind the law is right or not. Okay, whether due process has been followed while formulating the law or not, that is called as due process of law. देखो मीनिंग रे ही माने तो टर्म रे ही तार मीनिंग अछि। प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ माने जो लॉ बना हिची सेथिरे जो प्रोसीजर अछि केवल ताकू ही चेक करा जिवो जे तार इंटेंशन चेक करा हबनी कि whether the intention is correct or wrong nobody will check, I mean the supreme court will not check. But due process of law is more than procedure established by law. Okay, सेड कोन लेजिस्लेचर रो इंटेंट भी चेक करा हबो जो इंटेंट रे तमे लॉ बनैछ whether that is correct or not. For example एबे जो हमर अछि यूएपीए एक्ट, ओके यूएपीए एक्ट रे तमे जन को टेररिस्ट बोली डिक्लेयर करि परिबो, गोटे इंडिविजुअल को गोटे ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट बोली डिक्लेयर करि परिबो, ताकू डायरेक्ट ता ऊपर कोन एक्शन नै परिबो। एबे गवर्नमेंट किछरा तार प्रोविजन को अमेंड कला। ओके, तो एडी फॉर एग्जांपल हम कहूछ जज जन जाई चैलेंज कला सुप्रीम कोर्ट रे कि ए जो टर्म या तो ए जो प्रोविजन सेंटर ए लॉ रे आनी छि एडी सेंटर रो किछ गोटे मैलाफाइड इंटेंशन अछि ए प्रोविजन पछरे। तो इफ सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ then they will check whether the intention behind this provision is correct or is there any kind of malified intention of central government or state government जो भी नियम central government behind this kind of provision. Okay, तो सेठी से माने चेक करिवे with due process of law कि whether the intention is correct or not. For example आ गोटे तुमको example दोछि NJSC act. Okay, national judicial कमिशन एक्ट जोड़े कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैला 99th अमेंडमेंट एक्ट जानि समस्ते ताकू सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कला कि एडा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हना नहीं। तो सेडी कोन चेक हैला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने जो एनजेएससी पार्लियामेंट बनै छि जोडे कि से माने एग्जीक्यूटिव को भी इंक्लूड करथिले कि जो जज मानकर अपॉइंटमेंट हबो से डिसीजन मेकिंग रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो भी लॉ मिनिस्टर रहबे आउ जन जन के रहबे तांके गोटे बॉडी बनैथिले। ओके, जोडे कि सीजीआई रहबे जज रहबे माने हाई कोर्ट रो सीजीआई रहबे विथ लॉ मिनिस्टर रहबे। तो सेडा को जतलो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कला सुप्रीम कोर्ट सेतेले से माने चेक करले कि जो इंटेंशन गवर्नमेंट रो सेडा केते ठीक केते भूल। से माने केवल या चेक करलेनी जे सुप्रीम माने एनजेएससी एक्ट बनी गला से बेसिस रे जने जज सिलेक्शन हला तो ओके ठीक अछि ए कमिटी रे 10 जन रहयार थिला अछंती आ ये सिलेक्शन हेछि। नो, they have checked key whether the intention of the central government, okay, before formulating this act or policy was kind of constitutional or is there any malified intention or कौन अच्छी बुझ पारलो। तो सेडा को कहउछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने लॉ बनेला ले तमे प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करछ ना नहीं, तमर इंटेंशन ठीक अछि ना नहीं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रे सिंपली द जो प्रोसीजर लॉ रे अछि ताकू चेक करा हबो वेदर सेटा फॉलो हेछि ना नहीं। जदि हेछि इंटेंशन गवर्नमेंट रो ठीक थाउ भूल थाउ गवर्नमेंट लॉ बनै छि से लॉ अनुसार इम्प्लीमेंटेशन हेछि ना नहीं, दैट्स इट। बुझिलो लेमेन टर्म रे हम तुमको बुझाय चेष्टा करली डिफरेंस। यस सर, थैंक यू सर। तमे जतलो थैंक यू पढिबो सर। ए माने मीनिंग को नेकी पढो, स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। यस सर, थैंक यू। ओके, आउ कार किछि डाउट अछि? ठीक अछि देन हम सेशन एंड करबा। ओके, काली कोन चैप्टर पढाबो म तुमको जणे देबी सकाळे। हां, 2023 रे क्वेश्चन आस्थिला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हां, एडा देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हला माने क्वेश्चन को टफ नहीं, ए जो आंसर से माने देथिबे ना ऑप्शन तो माने परीक्षा रे बहुत कंफ्यूज हबो। मु भी मत लागु छी तुमको कोड क्वेश्चन आंसर आई थिंक भूल दे देथिली गोथर गोटे ये रे हला मु तुमको कहबी एडा आस्थिला एडा बहुत कंट्रोवर्शियल माने देखो यस सर, सबुडा सेम बलिया ही लागुची सब ऑप्शन लागिवो गुडा।
ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଏମିତି ବି ହୁଏ ତମ ମାନେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲି ୟୁପିଏସସି ୟା ତ ଓପିଏସସି ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ, ତମେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ମିନିଂ ବାହାର କରିପାରିବନି। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର କହିବେ ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର, ତମକୁ ସେଇଟା ଠିକ ଲାଗୁ ଭୁଲ ଲାଗୁ। ଓକେ, ସିଏ ଏମିତିଆ ଅପସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କନଫ୍ୟୁଜିଂ। ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଦି ତିନିଟା ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିଥିବେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର, ତମକୁ ବି ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର, ଫାଇନାଲି ୟୁପିଏସସି ର କି ଥିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହଁ, ଆଉ ତମକୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ସେ ଠିକ ବୋଲି। ତାର କଣ ପାଇଁ ବି ଠିକ ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଅପସନ ସି ଟା ଠିକ, ତମକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅପସନ ବି ଠିକ, ବଟ୍ ସିଏ କହିଲେ ସି ଠିକ ମାନେ ସି ଠିକ, କଣ ପାଇଁ ଠିକ ତା ପଛରେ ଲଜିକ କଣ କିଛି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ ଦେଖ ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ରୁଲ୍। ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଗो ଟୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ସ। ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ୱିଲ୍ ଓକେ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର କଣ ୟୁପିଏସସି ଦେଇଛି, ଓକେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମିନିଂ ବାହାର କରିବା, ବୁଝିବା, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ରିଏଲ ଏକ୍ସାମ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆପିୟର କରିବ, ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଓକେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ ୟୁର ଆଇ ମିନ୍ ତମେ ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ କରିବ ଭୁଲ କରିବ। ଓକେ, ଆମେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷରେ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିବ ଯେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତମେ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରୁଥିବ। ଓକେ, ଆମକୁ ବଡରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲେ କି ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉଟା କି 100% କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଗୁଡା ତମେ ଟିକ୍ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି, ତମେ ଅନଡାଉଟେଡଲି ମାନେ କ୍ଲିୟର କରୁଥିବାର ଅଛି ବେଞ୍ଚମାର୍କ। ମାନେ ଯଦି 60 ହଉଛି କଟ ଅଫ୍, ତମର ସ୍କୋର 80-90 ରହୁଥିବାର ଅଛି, ତାକି କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ତମେ ପାସ୍ କରିବ। ବୁଝିଲ, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ହିଁ ଗଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବ। ଓକେ, ତ ଡୋଣ୍ଟ वरी, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିଲ୍ କରିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କୁ ତମେ ଯଦି ନା ଏଡ୍ଜରେ ରହିବ ନା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଟ୍ରିକି। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମାନେ ତମ ସ୍କୋର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦେଖ 100ଟାରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ, 2ଟା କି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ହାର୍ଡଲି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବାକି ଯୋଉ 95 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ନା ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ 45-50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପୁରା କରେକ୍ଟ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେତିକି ତମକୁ ମିଳିବ ବି। ଓକେ, ତ ଡୋଣ୍ଟ वरी, ଆମେ ନେକ୍ସଟ